Assalamualaikum. How are you all? Warm welcome to the students in my class. Today we are starting the second last lesson of your book class 9, The Secret of Success yani कामयाबी का राज. A long time ago there lived a king who was in search of a secret of success यानी बहुत साल पहले एक बादशाह था जो कामयाबी के राज ढूंढने के कोशिश में था. He thought if he could find out the answers to three questions, he would discover this secret and would never fail. वो सोचता था कि अगर उन्हें इस तीन सवालों का जवाब मिल जाए तो वो इस राज को जान लेगा और कभी भी नाकामयाब नहीं होगा. The questions were, वो सवालात ये थे. What is the most important time to start some work? सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है किसी भी काम को शुरू करने का. What is the most important work to do? सबसे important काम कौन सा है करने के लिए. Who is the most important person? और कौन सबसे अहम शख्स है. The king asked his minister to announce that whoever answered these questions would get a reward of 5,000 gold coins. उस बादशाह ने अपने मिनिस्टर से कहा कि तुम वो ऐलान करवा दे कि जो भी इन तीन सवालों का जवाब देगा उसे 5,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे. Many persons came but none gave the correct answer. बहुत सारे शख्स आए लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे सका. To his court, तो उसने उसके बाद अपने मुल्क के पढ़े लिखे और अक्लमंद लोगों को अपने दरबार में बुलाया. He discussed the problems with them for many days. वो इनके साथ कई दिनों तक इस मसाइल को हल करने में लगा रहा. They too were not able to satisfy him because they could not see eye to eye with each other. और वो सब भी उससे मुतमईन ना कर सके क्योंकि वो सब भी खुद एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कोई बात नहीं कह पा रहे थे. वन आंसर द अदर्स आर्ग्यूड अगेंस्ट इट. अगर कोई एक जवाब देता तो दूसरा उसके मुखालिफ कोई बात करता था. इफ वन मैन एडवाइस वन थिंग द अदर वुड एडवाइस एग्जैक्टली द अपोजिट. अगर कोई शख्स एक मशवरा देता दूसरा उसके बिल्कुल मुकाबले में मुख्तलिफ मशवरा देता था. इफ वन मैन केम आउट विद वन सजेशन अनदर वुड सजेस्ट समथिंग टोटली डिफरेंट. अगर कोई इंसान किसी एक हिदायत के ऊपर आता दूसरा बिल्कुल उसके मुखालिफ को हिदायत देता था. The king did not approve of the answer. बादशाह ने उन तमाम लोगों के आंसर्स को भी अप्रूव यानी कबूल नहीं किया. Distance from the capital यानी उसकी मलकियत से कुछ फासले पर एक जंगल था. In this jungle there lived on an old and wise man who was known as a sand. उस जंगल के अंदर एक बूढ़ा और ज़ईफ अक्लमंद शख्स रहता था जो सैंड के नाम से मशहूर था. His fame had spread far and wide. उसकी शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी. The king had heard of him. बादशाह ने भी उसके बारे में सुन रखा था. He wanted to ask his advice. वो भी उनसे मशवरा लेना चाहता था. The trouble was that this man did not like the rich people. लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बूढ़ा शख्स अमीर लोगों को पसंद नहीं करता था. He did not want to mix with them, but he was friendly with the poor. तो वो शख्स जो था वो अमीरों में जल्दी घुलता मिलता नहीं था लेकिन वो गरीबों का बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था. Overcome this difficulty. आखिरकार बादशाह ने इस मसाइल यानी इस प्रॉब्लम का हल सोचने के लिए एक आइडिया सोचा. He dressed himself in rags and set out to see the sand. उसने अपने आप को एक फटे पुराने कपड़ों में ढाल लिया और वो सैंड को देखने के लिए निकल पड़ा. He wanted to appear as a poor man और वो खुद भी एक अभी गरीब शख्स नजर आ रहा था. He told his servants who were in attendance to stay behind went straight to the sand huts. उसने अपने मुलाजिम जो उसके साथ वहाँ मौजूद था उससे कहा कि तुम पीछे रहो और वो खुद सीधा उस सैंड की झोपड़ी की तरफ चल दिया. The sand was digging the ground in front of his hut. जो सूफी बुजुर्ग था वो अपने हट के आगे ही खुदाई कर रहा था. He was an old and a very weak man. वो एक बूढ़ा और बहुत कमज़ोर शख्स था. He was breathing very hard and stopped frequently to take rest.
وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد تھوڑا تھوڑا آرام کر رہا تھا۔ The king approached him and said, King اس بادشاہ اس کے پاس پہنچا اور کہا Sir, I have come a long way to find out answer to 3 questions. سر میں آپ کے پاس ایک طویل راستہ طے کر کے آیا ہوں ان 3 سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے۔ What is the most important time to start some work? What is the most important work to do? Who is the most important person? کہ سب سے بہترین کام کون سا ہے شروع کرنے کے لیے، سب سے بہترین کام کون سا ہے کرنے کے لیے، اور سب سے بہترین شخص کون ہے۔ Would you kindly help me by giving answer to these questions؟ کیا آپ میری ان سوالوں کے جواب دے کے مدد کریں گے؟ The sand paid no attention to the king and kept digging. صوفی بزرگ نے اس کی بادشاہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور وہ اپنی کھدائی میں لگا رہا۔ The king waited for a few moments and then said, بادشاہ نے کچھ دیر انتظار کیا اور کہا Sir, you look tired, let me dig the ground for you. سر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، لائیے میں آپ کے لیے کھدائی کر دیتا ہوں۔ The sand thanked him and gave him the spade. اس صوفی بزرگ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھاوڑا اس بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ The king started digging. اب اس بادشاہ نے کھدائی شروع کر دی۔ After some time he again asked the sand for the answers but he paid no attention. کچھ وقت بعد اس نے پھر سے اس صوفی بزرگ جوابات مطلوب کرے لیکن پھر سے کوئی اٹینشن اس صوفی بزرگ نے انہیں نہیں دی۔ He said, let me dig now. اس نے کہا لاؤ مجھے اب کھودنے دو۔ The king did not give him the spade but kept digging. بادشاہ نے اسے ہتھوڑا نہیں دیا اور پھاوڑا نہیں دیا، خود کھدائی کرتا رہا۔ He remained calm and did not lose patience. وہ پرسکون رہا اور اس نے اپنے صبر کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ He hoped that he would be able to get the answers. اس نے امید ظاہر کی کہ وہ ان کے جوابات کو حاصل کر لے گا۔ When evening fell, he stopped digging and said to the sand. جب شام ہونے لگی تو اس نے کھدائی روکی اور صوفی بزرگ سے کہا Could you please let me know the answers now؟ کہ اب براہ کرم کہ اب آپ مجھے ان کے جوابات دیں گے۔ The sand still gave no answer but pointed to one side. اس صوفی بزرگ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا لیکن ایک طرف اشارہ کیا۔ The king glanced in that direction. اس بادشاہ نے اس سطح کی طرف مڑ کر دیکھا۔ He saw a bearded man running towards them. اس نے دیکھا کہ ایک داڑھی والا شخص اس کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ He was gripping a dagger in his right hand. اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس نے ایک خنجر کو پکڑا ہوا ہے۔ When he reached them, he fell down and fainted. جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ The king straightway carried the bearded man inside the hut and gently lowered him to the ground. وہ بادشاہ نے فوراً اس داڑھی والے شخص کو اٹھایا اور اس صوفی بزرگ کے ہٹ میں لے گیا اور اسے بڑے آرام سے زمین پہ لٹایا۔ He managed to stop the bleeding immediately and put a bandage on his wound. اس نے فوراً سے اس کے خون کے رکنے کا انتظام کیا اور اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ The bearded man soon fell asleep. اور وہ داڑھی والا شخص سو چکا تھا۔ By this time night had fallen. اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ The king felt too tired to return home. بادشاہ بھی بہت تھک چکا تھا اور واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ The saint invited him to stay the night. اس صوفی بزرگ نے اسے رات رکنے کی دعوت دی۔ The king accepted his hospitality. اس بادشاہ نے اس کی مہمان نوازی کو قبول کیا۔ The saint gave him food. اس صوفی بزرگ نے اسے کھانا دیا and a simple bedding of dry hay to sleep on. اور سونے کے لیے سادہ سوکھی سی گھاس کا بستر دیا۔ At break of the day, the king awoke. دن کے ٹوٹنے پر بادشاہ اٹھ گیا۔ He found that the bearded man was awake. اس نے دیکھا کہ داڑھی والا شخص جاگ رہا ہے۔ The king said to him, How do you feel now? اس بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ The bearded man replied, I feel better. اس داڑھی والے شخص نے جواب دیا میں اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ Thanks to your majesty. تمہاری عظمت کا شکریہ۔ Forgive me. مجھے معاف کر دو۔ I came here to kill you. میں یہاں تمہیں مارنے کے لیے آیا تھا۔
because you had got my brother killed, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा था. I became your bitter enemy out of grief, मैं गम की वजह से तुम्हारा कड़वा दुश्मन बन गया था. I was hiding and waiting for your return, मैं छुपा हुआ था और तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहा था. As you did not return, I came out of my hiding place, जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला. Your servant saw me and recognized me, तुम्हारे नौकर ने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया. They wounded me seriously but I escaped, उसने मुझे शदीद ज़ख्मी कर दिया लेकिन मैं वहाँ से भाग गया. Had you not cared for me, I would have been dead, अगर तुम मेरी केयर नहीं करते तो मैं मर जाता. I thank you, तुम्हारा शुक्रिया. Now count me as one of your most faithful servants, अब आप भी मुझे अपने हमदर्द मुलाजमों से एक तस्वुर कर सकते हैं. Saying this, he saluted the king and left. उस थड़े वाले शख्स ने ये सब कहा और उस बादशाह को सल्यूट किया और वहाँ से चला गया. When the bearded man had departed, the king again asked the sand for the answer to his questions. जब वो शख्स चला गया तो बादशाह ने फिर से सूफी बुजुर्ग से अपने सवालात के जवाब मतलूब करे. The sand replied, उस सूफी बुजुर्ग ने जवाब दिया, You have already been answered, तुम्हें पहले ही जवाब मिल चुके हैं. The most important time was when you wanted to help me, सबसे बेहतरीन वक्त क्या था जब तुम मेरी हेल्प करना चाह रहे थे. The most important work was the digging of the ground, और सबसे बेहतरीन काम क्या था जब तुम खुदाई कर रहे थे. And I was the most important person, और मैं सबसे बेहतरीन शख्स हूँ तुम्हारे लिए. Had it not been so, you would have returned and been killed, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम वापस जाते और मारे जाते. The second time, दूसरे औकात में, the most important person was the bearded man, सबसे बेहतरीन शख्स, सबसे अहम शख्स वो दाढ़ी वाला शख्स था. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज ड्रेसिंग हिज बाउंड, और सबसे बेहतरीन काम तुम्हारा उसकी मरहम पट्टी करना था. हैड इट नॉट बीन सो, यू वुड नॉट हैव वॉन अ फेथफुल सर्वेंट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम एक ईमानदार मुलाजिम नहीं पा सकते, तुम बहुत खुश नसीब हो. So this is the moral of the lesson. लिहाजा यही इस सबक का अखलाकी असूल ये है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज़ द प्रेजेंट, सबसे बेहतरीन वक्त कोई भी काम करने के लिए वो है हाल जिसमें भी आप मौजूद हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ वॉट वी आर डूइंग नाउ, और सबसे बेहतरीन काम वो है जो आप अभी कर रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन होम वी आर विद एट द मोमेंट, और सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अभी आपके साथ उस लम्हे में मौजूद हो. That's all. This is the end of this presentation and this lesson. Any questions? Here, this is the 3 important questions for this chapter. You write down in your registers and give answer in your own wording. Thank you. Allah Hafiz.